The structure and function of a cell. The structure and function of a cell. Introduction. What is physiology? The term physiology was originally derived from a Greek root with Latin equivalent, that is physiologia, which denotes natural knowledge. It now denotes a study of a function of a living organism as a whole or its constituent part. A study of a mammalian physiology, which is the study of the dynamic interrelationship among different tissue and organ. It is mostly carried out at the organism level. The knowledge of physiology is important to appreciate the role of a mechanism that control bodily function. Clinical physiology is the study of physiological responses or a compensatory mechanism that occurs in normal system when other parts of the body are diseased. For example, the study of changes in lungs, liver, and kidney when the heart goes into failure. Applied physiology is the study of underlying mechanism that control body function with aging during exercise, the effect of a low or a high barometric pressure, oxygen lack, yoga, meditation, etc. Physiology is therefore the discipline that deals with the bodily function and their control. It is, however, only concerned with the normal. Then physiological system. Figure 1.1 shows the different level of organization of living organism. At a fundamental level, atom of element links together to form molecule, the smallest unit of structure capable of carrying out all life process in the cell. Simple organisms are composed of only one cell, but complex organisms have many cells with different structural and functional specialization. Collection Collection of cells that carry out related function are known as tissue. Tissue form structural and functional unit known as organ, and group of organ integrate their function to create organ system. Figure 1.2, table 1.1. Homeostatic regulation. In the 19th century, Claude Bernard, French physiologist, was first to recognize the importance of maintaining a stable internal environment. The cell, tissue, organ, and organ system of the body are interconnected and live together in a shared internal environment. Blood forms internal environment of the cell, that is milieu interior, in terms of volume, water composition, ion concentration, pH, and temperature. This is regulated to normal, matlab narrow physiological limits with respect to in the minor changes in the body. ओके तो फर्स्ट हमारे लिए आ गया एटम मॉलिक्यूल्स. ये केमिस्ट्री का पार्ट है, एटम से मॉलिक्यूल. देन आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका सेल आएगा, सेल बायोलॉजी में टिश्यू आएगा. देन उसके बाद ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसीज. ये ऑर्गन से लेकर के पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसीज आपका फिजियोलॉजी का पार्ट है. एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म आएगा, देन पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसीज, दैट इज फिजियोलॉजी. पूरा पार्ट ऑर्गन से लेकर के पॉपुलेशन ऑफ वन स्पेसीज, दैट इज फिजियोलॉजी. ओके. टिश्यू आपका आएगा सेल बायोलॉजी के अंतर्गत. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका सेल आएगा. सेल बायोलॉजी में टिश्यू आएगा. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेल. ओके ठीक है. A variety of a physiological mechanism which act to stabilize the internal environment are called as homeostatic mechanism, a term coined by the American physiologist W. Cannon in 20th century. The adjustment in physiological systems that are responsible for the
Preservation of a homeostatic stasis are referred to as homeostatic regulation. Then, homeostatic regulation usually involve a receptor sensitive to a particular stimulus and an effector whose activity affects the same stimulus. Also referred to page 507557. Negative feedback mechanism. Most homeostatic mechanism involve negative feedback, that is a corrective mechanism involving an action that directly opposes a variation from normal limits. Therefore, an increase or decrease in variable being regulated brings about a response that tends to push the variable in the direction opposite, that is negative, the direction of original changes. For example, rise in blood pressure, कोई भी स्टिमुलस के कारण जब ब्लड प्रेशर राइज होता है तो इससे होता है क्या है, ये काम करेगा भाया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत ये डिक्रीज कर दिया जाएगा टू नॉर्मल लिमिट्स एंड ये आपका हो जाएगा response. Okay. Now here the initial stimulus produces a response that depresses that stimulus. That is, stimulus and response are opposite to each other. In general, nervous system prefers corrective management by directing rapid, short-term and very specific response. On the other hand, the endocrine system release chemical messenger जिसको हम हार्मोन कहते हैं that affects tissue and organ throughout the body. The response may be slow to begin with, but often persist for days or weeks. However, both systems are usually controlled by negative feedback mechanism. Now, organ system of the human body. पहले सिस्टम नेम ऑर्गन या टिश्यू, उसके बाद उसका फंक्शन. सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसमें क्या क्या ऑर्गन आएगा या टिश्यू आएगा, हार्ट आएगा, ब्लड वेसल आएगा, ब्लड आएगा. ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मटेरियल बिटवीन ऑल सेल ऑफ द बॉडी. डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज आएगा. कन्वर्सन ऑफ अ फूड इनटू पार्टिकल्स that can be transported into the body, elimination of waste. Then endocrine system, इसमें थायराइड ग्लैंड आता है, एड्रेनल ग्लैंड आता है, एक्सेट्रा. कोऑर्डिनेट द बॉडी फंक्शन थ्रू सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स. देन आपका इम्यूनो सिस्टम आएगा, इसमें थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड आएगा. डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर. इंटेगोमेटर सिस्टम, इसमें स्किन आएगा. प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसमें स्केलेटल मसल, बोन आएगा, सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए काम आता है. नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होता है. कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड रिलीज ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स. देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ओवरीज, यूटेरस, टेस्टिस जो होता है. प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसीज इसमें आएगा. रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स, एयरवेज आएगा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. देन आपका यूरिनरी सिस्टम आएगा, इसमें किडनी, ब्लैडर होता है. मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, वेस्ट रिमूवल में काम आता है. देन ये होता है आपका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म खत्म हुआ. देन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अच्छा, यहाँ तक खत्म. कितना पेजेस हो गया, 1 पेज, 2 पेज. अच्छा, इतना रहने दे. टाइम 150 हो गया. ओके, तो आज इसको खत्म करते हैं. 24 दिसंबर है आज का दिन. 24/12/25 रीड. Thanks for watching.